Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, the last topic that we discussed was about refraction of light, its properties of light, terms used, refraction in different mediums. You please recall all these things. Recall refraction of what is refraction of light. इसको आसान तरीन जो जहन में अपने डेफिनेशन रखनी होगी है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी रोशनी का अपने असल रास्ते से भटक जाना, अपने असल रास्ते से हट जाना is known as refraction of light. So recall that topic of refraction of light in your mind. उसका कॉन्सेप्ट जहन में रखो. नंबर 2, what are the properties of light? इसकी खसूसियात क्या हैं इसके लाइट के. So what are the properties of light? पहला ये है, it does not require a medium. रोशनी मोहताज नहीं है. It is not dependent upon the medium to propagate. इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये dependent, it is not dependent upon medium. It does not require a medium. 2, second property that we studied last time was this, the light travels with different speed in different mediums. Whichever medium is from which it is passing through, it has a different speed. Say some of the medium say is oil, and the others is air. Some medium is vacuum. So it does not require any. Maximum speed of light is in vacuum, and when light is dependent upon, when light is is incident upon a surface perpendicular, then no change in direction takes place. तो पिछले टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसमें ये 4 चीज़ें ज़हन नशीन रखो. नंबर 1, what is refraction? Refraction किसे कहते हैं? Refraction is bending of light or change in direction or its speeds in different media or when passing through a medium. So वो refraction होगी. Properties क्या है? Number 1, light does not require a medium. Light को ज़रूरत नहीं है मीडियम के गुजरने के लिए. दूसरी, इसकी स्पीड या इसकी डेविएशन मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ मीडियम्स में. तीसरी, मैक्सिमम स्पीड इसकी होती है वैक्यूम में. और जब रोशनी की शुआ किसी भी सरफेस पर किसी भी मीडियम पे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज उस पर आके गिरती है, उस पर वकू पजीर होती है, एट दैट टाइम द स्पीड, द डायरेक्शन डज नॉट चेंज, इट गोज थ्रू स्ट्रेट. These are the properties that we studied. Keep these in mind. Then we use some terms. We said incident light, यानी वो रोशनी की शुआ जो कि किसी जगह पर इम्पेंज होती है. मसलन मैंने टॉर्च पकड़ी, मैंने टॉर्च ऑन की, शीशे पर रोशनी डाली, तो जो ये अब नाउ आई एम, दिस इज़ द इंसिडेंट लाइट दैट इज़ गोइंग ओवर देयर. देन व्हाट इज़ रिफ्रैक्टेड? रिफ्रैक्टेड लाइट वो लाइट है जो मीडियम में से गुजरने के बाद अपने रास्ते से जो भटकी होती है वो, that changes or the light, the path of light which gets changed when passing through certain medium. Then we talked about the point of incidence. The point of incidence is that point at which the light is incident upon and where refraction takes place. And then we used the terms, the refracted ray, the incident ray, the point of incidence, angle of incidence, angle of refraction, and the emergent ray. Remember all these terms which we used earlier. Now refraction, different medium, refraction takes place different medium. When I say refraction is different in different medium, this means that the bending of light is different in different mediums. मुख्तलिफ मीडियम्स में, मुख्तलिफ वसीलों में रोशनी जो है वो अपने रास्ते से बेंड जो होती है, अपने रास्ते से डायरेक्शन चेंज करती है, वो मुख्तलिफ होती है. किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है. सिमिलरली द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज़ डिफरेंट. वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. देन वी टॉक्ड अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 थे, जैसे कि आपने लास्ट टाइम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ऐसे ही we studied about the laws of refraction. And the first law that we studied was that the incident ray कौन सी है? जो कि रोशनी की शुआ किसी भी दूसरे वसीले पर आके वकू पजीर होती है. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incident lies in the same plane. And the second law was that the ratio of the speed of light in a certain in vacuum to the speed of light in a medium bears a constant ratio. Today's topic is, what we have to study today is about refractive index. Now what is refractive index? आपने इसको थोड़ा बहुत
कल हमने इंट्रोड्यूस करवाया था टॉपिक को, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन लिटिल बिट मोर डेप्थ. You have observed that the speed of light varies in different mediums. ये आपने वेरीज का मतलब तब्दील होती है. रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होती है. We have studied this thing too. अब ये रोशनी की रफ्तार क्यों मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ मीडियम में? It is because every medium has some quality of being more denser than the air or more lighter than the air, or lighter than the air or denser. So whichever is the medium, the speed varies accordingly. Then second, we studied about this thing that some cause light to bend more than others. बाज़ मीडियम ऐसे होते हैं जिसमें जब रोशनी की शुआ दाखिल होती है तो वो अपने रास्ता को ज़्यादा चेंज करती है, बाज़ में वो कम करती है. ये भी इसकी खसूसियत है. The degree, now what is refractive index? गोया के bending of light takes place, the bending of light takes place because of the medium through which it is passing. If the medium is of a certain kind, I will not use any other term now, it may cause the direction to change more, or it may cause it less. So every medium has its own property to change the direction of light. So the degree to which a medium can bend light is given by its refractive index. तो refractive index क्या हुआ? Refractive index का मतलब ये है वो क्या डिग्री है कि what is the degree to which a medium can bend light. मतलब किसी भी मीडियम में क्या सलाहियत है कि वो रोशनी को कितना बेंड करती है. दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इंग्लिश में कैसे कहते हैं इसको? द डिग्री, यानी कि क्या ज़्यादा या कम, कमोबेशी. द डिग्री टू विच अ मीडियम कैन बेंड लाइट इज गिवन बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड द डेफिनेशन इज, नाउ वी विल कम ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम. क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कि किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेशो है कि रोशनी की रफ्तार किसी एयर में या वैक्यूम में कितनी थी. इट इज़ मोर करेक्ट टू यूज द वर्ड वैक्यूम, बट योर बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट एयर. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी किसी मीडियम में कितनी है. मतलब अगर आप पहले इसका रेशो, ये जो जब किसी तकसीम करते हैं दो चीज़ों के दरमियान में तनासुब निकालने के लिए, उसको हम रेशो कहते हैं. व्हाट इज़ रेशो? रेशो मीन व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द स्पीड, द रेशो ऑफ द स्पीड. इस लाइन को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तकसीम करने को हम रेशो कह देते हैं. मतलब 1/2 तो क्या है ये? वन इज डिवाइडेड बाई 2, वी से इट इज़ द रेशो बिटवीन 1 and 2. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्पीड, is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in vacuum in a medium. So क्या हुआ refractive index? यानी कि speed of light कितनी थी किसी वैक्यूम में, उसको डिवाइड किया speed of light किसी भी मीडियम में. मिसाल के तौर पर ऑयल में, तो वो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया. अगर आपने ट्रांसपेरेंट ऑयल लिया है, उसमें रोशनी गुजार रहे हो, तो वो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का होगा. एंड इफ़ यू टेक द मीडियम एज एयर, देन यू हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. If you have water, then the ratio of the speed of light in vacuum to water is known as the refractive index. So refractive index क्या हुआ? Refractive index is the degree to which a medium can bend light. यानी कि उस मीडियम की कितनी सलाहियत है रोशनी को बेंड करने की, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द डिग्री टू विच ए मीडियम कैन बेंड लाइट इज गिवन बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, or is known as the refractive index, and the definition is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. So refractive index क्या हुआ कि आपने पहले वैक्यूम में खला में रोशनी की रफ्तार मालूम की कितनी है, और उसको तकसीम कर दिया रोशनी की रफ्तार किसी भी मीडियम में जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है. शीशा है या प्लास्टिक है ट्रांसपेरेंट, या पानी है, या आपके पास जो है ऑयल है. व्हाट इज़ द मीडियम दैट यू आर यूज, उसके अंदर कितना रिफ्रैक्ट. सो रिमेंबर दिस फार्मूला. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. नाउ
I will go on to the next topic, which is 9.4 real and apparent depth. यानी बाज़ औक़ात आपका यह मुशाहिदा होगा कि when you are looking in a swimming pool तो आपको वो कम गहरा महसूस होता है, whereas the actual depth is more. And yesterday, you know, we did the activity 9.1 in which you placed a plate at a certain distance from you and you kept positioning yourself in such a way that after a coin has been put into the plate, you cannot see it. When you cannot see it, at that point you ask your friend to put some water into the plate, and the level of water as it starts rising, you will see that the coin was there. This was the experiment that we did yesterday. This was because of telling you what refraction was taking place. Now, real and apparent depth, how does it occur? It is primarily because of refraction of light. Sometimes refraction of light gives us a false impression of depth. Refraction of light जो है ना बाज़ औक़ात आपको जो है ना किसी भी चीज़ की गहराई का गलत तासुर दे देती है. क्या मतलब है इसका? Sometimes reflection of light gives us a false impression of depth and position of objects. ये आपने अक्सर औक़ात स्विमिंग पूल में जब जाते हो तो देखते हो, महसूस होता है, या पानी में आपने you take a glass of water, put some coin in it, you will see when you look from the top, you will see as if it has risen itself. Now, to find out real and apparent depth or why it occurs, let us have another point to make it clear. We have seen that clearer swimming pools look shallower than their actual depth. जो बहुत साफ पानी वाले स्विमिंग पूल होते हैं वो कम गहराई वाले नज़र आते हैं अपने एक्चुअल डेप्थ से, असल गहराई से. ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से होता है. डी. नाउ द एक्चुअल रीज़न व्हाई इट हैपन्स व्हेन लाइट, पॉइंट नंबर 6, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर. ये भी आपने पढ़ा कि रोशनी जो है वो तेज़ी से चलती है एयर में एज़ कम्पेयर टू वाटर. पानी में उसकी स्पीड कम हो जाती है. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, जब रोशनी किसी कसीफ वसीले में से निकल के और लतीफ़ वसीले में जाती है, फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यानी वो नॉर्मल से अपने 90 के ज़ाविये से एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उससे दूर हो जाती है. मिसाल के तौर पे वी हैव सीन दिस थिंग, ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम. दिस इज़ एयर एंड दिस इज़ वाटर. ओके, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. नाउ दिस इज़ वाटर, this is air. Now suppose you have a swimming pool in which some object has been dropped. मिसाल के तौर पर एक बॉक्स गिर गया उसके अंदर. The rays of light coming from here will bend away from, इसका रास्ता ये था जाने का ऐसे, this was the actual path, वो यहाँ से bend होके इस तरफ हो गया, away from the normal. So when ray of light goes from the denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. So ये शुआ यहाँ से निकली, जो बॉक्स आपका नीचे गिर गया था पानी में, ये यहाँ से इस तरफ होगी, बेंड होगी, बिकॉज डेंसर मीडियम से लाइटर में आ रही है. दूसरी शुआ इधर होगी, तो आपको जब इन दोनों शुआओं को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो इमेज यहाँ नज़र आता है. सो दैट इज़ वाई दैट द बॉक्स लुक्स हायर दैन वेयर इट इज़, एंड एक्चुअल डेप्थ इसकी ये है और आपको डेप्थ इसकी ये नज़र आती है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई द अपेरेंट डेप्थ इज़ कॉज्ड. क्यों आपको महसूस होता है कि इसकी गहराई कम है. नाउ आई विल रिकैपिचुलेट द होल टॉपिक अगेन so that it becomes clear, and please call me whenever you have any difficulty. Don't feel shy. Today's topic is about refractive index, but before we go on to the refractive index, please clear a few points which we covered yesterday. We talked about refraction of light. कि refraction क्या होता है. Refraction of light, what is refraction? इसको recall करो. Number 2, what are the properties of refraction?
Refraction is the simply refraction means bending of light from its original path. अपने असली रास्ते से भटक जाने का नाम रिफ्रैक्शन है. और ये कब होती है? When light enters from किसी भी मीडियम में दूसरे मीडियम में दाखिल होती है. मिसाल के तौर पर हवा से पानी में जा रही है या पानी से हवा में. Only then refraction will takes place. Refraction can only take place when light goes from one medium into another medium. Then its properties हमने क्या पढ़ा था? नंबर 1, लाइट को कोई ज़रूरत नहीं है किसी मीडियम की अपनी प्रोपगेशन के लिए, अपनी ट्रैवलिंग के लिए. लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट. 2, the speed of light is different in different mediums. 3, the maximum speed of light is in vacuum. 4, and when it falls perpendicular on the surface of another medium, no change in direction takes place. Then we talked about some of the terms. What is incident light? What is the incident ray? What is the refracted ray? What is the point of incidence? What is the angle of incidence? And what is the angle of refraction? We talked about this yesterday. Now, refraction in different medium, we also talked about this thing कि मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ रिफ्रैक्शन होती है, मतलब लाइट मुख्तलिफ बेंड होती है मुख्तलिफ मीडियम में. Then we talked about the laws of refraction. The first law was that the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. Second was the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in a medium bears a constant ratio. Today's topic is about refractive index. What is refractive index? Refractive index क्या है? The speed of light varies in different medium. पहली बात ये ज़हन नशीन रखो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए, that the speed of light varies, तब्दील होती है in different medium, मुख्तलिफ वसीलों में. 2, some cause light to bend more than others. बाज़ वसीले जो हैं, बाज़ मीडियम जो हैं, वो रोशनी को ज़्यादा बेंड करते हैं बनिस्बत दूसरों के. 3, the degree to which a medium can bend light is called its refractive index, or is known as refractive index, or is given by refractive index. क्या है refractive index? Now this is the real definition. The degree to which a medium can bend light. This is known as refractive index, or the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in the medium. क्या होता है refractive index? The ratio इस लाइन को कहते हैं. जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिवाइड करें, 1/2 करें, तो 1 और 2 के दरमियान में क्या निस्बत है. इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट यहाँ आपने लिखी वैक्यूम में कितनी है और स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कितनी है, उसको दूसरे से इससे इसको डिवाइड किया, इसको हम कहेंगे रेशो. द रेशो, सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. दोबारा सुनो, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रेशो का लफ्ज़ इस लाइन की वजह से आया. द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ medium. This is known as a refractive index of this medium. इस medium का कितना refractive index है? Okay. Now the next topic is about 9.4, which is real apparent depth. Sometimes you observed that the swimming pool, when it is very clear, looks shallower. कम गहरा लगता है as compared to actual. Why does it happen? It gives you false impression. Why? We have seen this thing that this phenomena takes place because of refraction. Light travels faster in air than in water. Number 1, you know that air is a lighter medium, water is a denser medium. When light travels from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. जब भी रोशनी किसी भी dense medium है, ये पानी है, ये dense medium है, यहाँ से जब निकल के बाहर निकलती है, शुआ मसलन यहाँ आपने बल्ब लगाया हुआ है, तो उस बल्ब की रोशनी बाहर जब निकलेगी तो वो इस तरफ अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी. सो जब ये बॉक्स अंदर गिर गया, इसके अंदर पानी में, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, it falls down over there, rays of light bend away from the normal, इनको extend करो तो यहाँ image बन रहा है. The image is little higher than the actual depth. That is why this becomes the apparent depth and this has become the actual depth. और ये जो है, ये phenomena takes place because of refraction. When light travels from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. ये बहुत important points हैं, इसको अपने याद रखना है, because without this the complete topic or the concept will not be clear. When this refracted light enters our eyes, the bottom of the pool and objects lying on the bottom appear close to us than they actually are. Now please make good notes of it, draw diagrams, practice them, draw headings and talk to me
give me a phone call on 0333 5516358 or 0336 5473312 and have a word with me to remove any difficulty that you might have. Thank you very much.